welcome to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. क्यों एक CISF ऑफिसर ने आलिया भट्ट को एयरपोर्ट पर जाने से रोका? फाइनली नेटिजन्स ने स्पॉट किया अपनी फेवरेट एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस को. किस तरह करीना कपूर खान और करिश्मा कपूर सेलिब्रेट कर रही हैं अपने डैड रणधीर कपूर का बर्थडे. रुक जाए ना, बस हो गया. अच्छा फोटो है. अलिया जी यहाँ पे. मैम यहाँ पे. सलमान खान के बाद आलिया भट्ट को एयरपोर्ट पर CISF ऑफिसर ने कहा टू प्रूव आइडेंटिटी. आलिया भट्ट ने CISF ऑफिसर की रिक्वेस्ट को फुलफिल किया विदाउट एनी हेजिटेशन. आलिया भट्ट गंगूबाई काठियावाड़ी के वर्ल्ड प्रीमियर इवेंट के लिए पहुंची बर्लिन. आलिया भट्ट अपनी सिस्टर शाहीन भट्ट के साथ हो चुकी हैं रवाना 72nd बर्लिन फिल्म फेस्टिवल के लिए, जहां होने वाला है फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी का ग्रैंड प्रीमियर. और मुंबई से जब आलिया भट्ट रवाना हुई बर्लिन के लिए तो एयरपोर्ट पर एंट्री के दौरान आलिया भट्ट ने मास्क पहन रखा था एंड शी रीच्ड टू द सिक्योरिटी काउंटर, जहां आलिया भट्ट को CISF स्टाफ ने कहा टू प्रूव हर आइडेंटिटी, जिसे आलिया भट्ट ने तुरंत मान लिया और अपना मास्क हटाकर प्रूव की अपनी आइडेंटिटी. आलिया भट्ट के इस प्रॉम्प्ट बिहेवियर को फैंस ने किया पसंद. लेकिन वहीं हाल ही में आलिया भट्ट की एक सैलून आउटिंग पर उनके ड्रेस को देखकर नेटिजन्स ने उन्हें जमकर ट्रोल करना शुरू कर दिया. दरअसल आलिया भट्ट को पैप्स ने जब किया स्पॉट वो सिंपल क्वाड ड्रेस में आई नजर, लेकिन नेटिजन्स ने आलिया भट्ट की इस ड्रेस को नाइट सूट से कंपेयर करना शुरू कर दिया. एक यूजर ने लिखा, नाइट ड्रेस तो चेंज कर लेती. Another one called it a pajama set. वहीं एक और यूजर ने लिखा, ये नाइट ड्रेस में एयरपोर्ट जा रही है. एक दूसरे यूजर ने लिखा, सोने जा रही है क्या नाइटी में. यानी आलिया भट्ट का ये कैजुअल अवतार नेटिजन्स को नहीं समझ आया. लेकिन आपको बता दें, थोड़ी ही देर बाद आलिया भट्ट इस व्हाइट एंड व्हाइट आउटफिट में नजर आई, अपने स्टाइल को फ्लॉन्ट करती हुई. दोनों जन एक सेकंड सिर्फ रुक. आलिया मैम रुक जाना. मैम रुक जाइए. अलाउड नहीं है. आगे हम लोग को भगा देंगे मैम. इधर रुक जाए ना, बस हो गया. अच्छा फोटो है. अलिया जी यहाँ पे. मैम यहाँ पे. वैसे आलिया भट्ट की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी का जिस बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में प्रीमियर होने वाला है, वहां से अपडेट आई है कि अब तक 50 लोग पैंडेमिक रिलेटेड वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं और इस फिल्म फेस्टिवल के ऑर्गेनाइजर्स पूरी तरह से प्रिकॉशन ले रहे हैं. वी जस्ट होप आलिया भट्ट की फिल्म का प्रीमियर हो जाए विदाउट एनी हिकअप एंड वी विश ऑल द बेस्ट टू भट्ट सिस्टर्स. कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर कंट्रोवर्सी को भुलाकर जैकलीन फर्नांडिस ने किया मूव ऑन. इस शॉकिंग कंट्रोवर्सी के बाद पहली बार जैकलीन फर्नांडिस को पार्टी करते हुए किया गया स्पॉट. क्या जैकलीन फर्नांडिस मुड़ के सॉन्ग से पब्लिक लाइफ में वापसी की कर रही हैं कोशिश? एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस मल्टी करोड़ के फ्रॉड केस में एक कॉनमैन से नाम जुड़ने के बाद अंडरग्राउंड चली गई थी. जैकलीन फर्नांडिस ने पूरी तरह से मीडिया से बना ली थी दूरी और जैकलीन फर्नांडिस किसी भी पब्लिक इवेंट पर नहीं हो रही थी स्पॉट. लेकिन अब फाइनली जबकि जैकलीन फर्नांडिस का सॉन्ग मुड़ के विद 365 डेज फेम स्टार मिखाइल मोरोने के साथ रिलीज हो चुका है और इस सॉन्ग को मिल रहा है ठीक ठाक रिस्पॉन्स, जैकलीन फर्नांडिस पब्लिक लाइफ में वापसी की कोशिश कर रही हैं. जैकलीन फर्नांडिस को मुड़ के सॉन्ग के सिंगर और अपने हेयर एंड मेकअप स्टाइलिस्ट फ्रेंड शामू के साथ स्पॉट किया गया आउटसाइडर रेस्टोरेंट, जहां रिपोर्टेडली ये सभी सॉन्ग की सक्सेस को सेलिब्रेट करने पहुंचे थे. यहाँ जैकलीन फर्नांडिस पहले की तरह पैप्स से कॉर्डियल अंदाज में मिलती नजर आई और यहाँ पोज भी किया. आपको बता दें, पिछले कई महीनों के बाद ये मौका आया जब जैकलीन फर्नांडिस किसी पब्लिक प्लेस में स्पॉट की गई हैं एंड
इट्स अ सिग्नल कि मल्टी करोड़ स्कैम से मिली नेगेटिव पब्लिसिटी को भूलकर जैकलीन फर्नांडिस आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं। वैसे जैकलीन फर्नांडिस पब्लिक प्लेसेस ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर भी फुल ऑन एक्टिव हो गई हैं और उन्होंने अपने सॉन्ग मुड़ मुड़ के पर एक स्पेशल वीडियो रिकॉर्ड किया है शक्ति मोहन के साथ, जिसे फैंस कर रहे हैं काफी ज्यादा पसंद। इस वीडियो को जैकलीन फर्नांडिस के फैंस कर रहे हैं प्रेस और खुद नेहा कक्कड़ ने इस वीडियो पर लिखा, जस्ट सो हॉट यू टू एट शानमू, क्या बात है। वहीं एक फैन ने जैकलीन फर्नांडिस के डांस पर लिखा, इतना खतरनाक डांस कर रही हो और बोल रही हो मुझे देखना मुड़ मुड़ के, मैं तो देखूंगा। और एक यूजर ने तो जैकलीन फर्नांडिस को बताया बेटर डांसर देन शक्ति मोहन। Jacqueline's better than Shakti for sure. Well, though she's not a dancer but an actress, she's perfect than Shakti, who is training herself as a dancer since quite long, but still not yet reached perfection. Didn't want to judge them both, but still, जो है वो है. Love you, Jacqueline. साफ है जैकलीन फर्नांडिस की फैन फॉलोइंग अभी भी नहीं हुई है कम। वहीं बात करें जैकलीन फर्नांडिस के सॉन्ग को मिल रहे फीडबैक की, तो जहां कुछ लोगों को ये पार्टी नंबर पसंद आया है, वहीं कुछ लोग इस सॉन्ग के लिरिक्स से लेकर म्यूजिक को ट्रोल कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, क्या अजीब लिरिक्स हैं। वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा, RIP लिरिक्स एंड म्यूजिक। और एक यूजर को एक्सेसिव ऑटो ट्यून इस गाने में पसंद नहीं आया। भाई, इतना ऑटो ट्यून है कि कोई इंस्ट्रूमेंट्स लिरिक्स गा रहे हैं, ऐसा लग रहा है इधर। वैसे ये पहली बार नहीं जब नेहा कक्कड़ और टोनी कक्कड़ के सॉन्ग्स को इस तरह का रिस्पांस मिला है, लेकिन ये कहना भी गलत नहीं होगा कि टोनी कक्कड़ और नेहा कक्कड़ की अपनी ही कल्ट फैन फॉलोइंग है और यही वजह है कि ये सॉन्ग्स हिट हो जाते हैं ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स इन नो टाइम। करीना कपूर खान और करिश्मा कपूर ने अपने डैड के बर्थडे को बनाया स्पेशल। करीना कपूर खान ने अपने डैड को कहा बेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। करिश्मा कपूर ने कहा ऑलवेज स्टे यंग एट हार्ट डैड। कपूर फैमिली आज अपने घर के वन ऑफ द मोस्ट सीनियर पर्सन रणधीर कपूर के बर्थडे को सेलिब्रेट कर रही है और इस खास ओकेशन पर करीना कपूर खान अपने बेटे तैमूर अली खान के साथ पहुंची अपने डैड रणधीर कपूर के घर। वहीं करीना कपूर खान ने सोशल मीडिया पर अपने डैड की इस पिक्चर को शेयर करते हुए लिखा, हैप्पी बर्थडे टू द बेस्ट मैन इन द वर्ल्ड पापा, #my father, #my sweet father, Best Nana to Samu, Kiyu, Tim Tim and Jeh Baba। करीना कपूर खान के इस पोस्ट पर उनके हजारों फैंस और सेलेब्स ने किया रिएक्ट और रणधीर कपूर को किया विश। वहीं करिश्मा कपूर ने इस स्पेशल वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, Always stay young at heart, my papa. Happy 75th birthday. We love you so much. You're the best. #ये जवानी है दीवानी। यानी रणधीर कपूर की दोनों डॉटर्स ने अपने डैड के बर्थडे को स्पेशल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन आज रणधीर कपूर की फैमिली जिस तरह एक साथ और हैप्पी है, कुछ सालों पहले ऐसा नहीं था। रणधीर कपूर और उनकी वाइफ बबीता 1988 में ही सेपरेट हो गए थे, लेकिन इन दोनों ने एक दूसरे से कभी डिवोर्स नहीं लिया। रणधीर कपूर और बबीता के रिश्ते की बात करें तो इनका रोमांस एक फिल्म के सेट पर शुरू हुआ, जहां रणधीर कपूर के डैड राज कपूर को इनके बारे में पता चल गया, जिसके बाद रिपोर्टेडली खुद राज कपूर ने रणधीर कपूर और बबीता की शादी करवाई और इनका रिश्ता काफी वक्त तक सही चलता रहा। लेकिन खुद रणधीर कपूर ने एक्सेप्ट किया कि जब उनका करियर बॉलीवुड में खत्म होने लगा, वो हद से ज्यादा शराब पीने लगे और कहीं ना कहीं यही वजह रही कि उनका सेपरेशन हो गया। रणधीर कपूर ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, She found that I was a terrible man who drank a lot and came home late, which was something she didn't like, and I didn't want to live the way she wanted, and she couldn't accept me as I am, though it was a love marriage. So it's okay. We had 2 lovely children to look after. She brought them up in the best way, and they have excelled in their career. What else could I have asked for as a father? लेकिन रणधीर कपूर और बबीता कपूर ने कभी डिवोर्स नहीं लिया। शायद इनके दिल में हमेशा से था कि ये प्यार से साथ आ सकते हैं और हुआ भी ऐसा ही। इन दोनों ने अपनी डॉटर्स करीना और करिश्मा की अच्छी तरह से परवरिश की और एक बार
बाद जब रणधीर कपूर से पूछा गया कि उन्होंने बबीता से डिवोर्स क्यों नहीं लिया, तो इस पर उनका कहना था, डिवोर्स फॉर व्हाट? Why should we head for divorce? I don't intend to get married again, and nor does she. Well, इनका डिवोर्स ना लेना इनकी फैमिली के लिए रहा बेस्ट डिसीजन, क्योंकि आज हर फैमिली मेंबर है इन अ हैप्पी स्पेस। Coming up on the show, the marvelous Mrs. Maisel की स्टारकास्ट ने Zoom से किया exclusively interact. Hello everyone, I'm Vidrani and welcome to Speak Easy. Today I have the women who are fascinating and they add so much more color to the marvelous Mrs. Maisel's life. I'm talking about the women who are amazing. Hello and welcome to Zoom TV India. Hello. Hi. Rachel, the first question is for you. I'm sure you can draw parallels, especially because you're an actor who didn't have any contacts in the industry. I'm sure you could make parallels with your own life where you thought, okay, now I've made it. But then everything goes back to normal the next day. Tell me about that and what you thought of that in the show. I mean, I feel really lucky to have spent the early years in this business working with almost exclusively actors who are older and wiser than I am. So I have always known better than to think that you've reached the top, because it doesn't exist. It's a constant evolution. You're always being forced to reevaluate yourself and your priorities and your craft. And frankly, if you ever feel like you've reached the top, you're about to get screwed. I think that Mooj and Susie in this season and throughout the course of the show are very much experiencing that and navigating it in real time. How do they come back, and how do they come back even better than they were before? How can they be the truest version of themselves and create space for themselves when there hasn't been space that looks like the kind of space they want to hold before? You know, one of my favorite bits in the show is about the comparison between comedy and women. And I think a lot of your monologues and with great writing and with your delivery brings out those little stereotypes that are relevant even today, like women not being funny, women not knowing how to manage themselves, not being able to take control of their lives or otherwise. Like I said, the favorite thing is comedy is fueled by oppression, by the lack of power, by sadness and disappointment, abandonment and humiliation. Now, this part I want to know, I'm sure you relate to as well, and I'm sure even Alex does. Tell me what you thought of it when you first did this, and how relevant is it even today? No, it's so, I mean, it's so good, and it I think highlights not just women, a number of other groups who have been left out of this comedy space. You know, that it's true that comedians have to have such a deep well to draw from to be able to make people laugh and to be able to hold up that mirror that brilliant comedians do so well. That was certainly one of my favorite scenes to shoot. But I feel like it was 1950s. They didn't want to believe women were funny then, and some still want to believe women are funny even now, which statement is so problematic and annoying to hear all the time. Tell me, when you were doing this show, I'm sure you were discussing about this as well, and it came to your mind as saying, I've never really had a good answer because it makes no sense to me. I think women are women I know, and some of the writers on the show, women are some of the funniest people I know. But Alex said something earlier that I think she should repeat about why that phrase still persists. Oh, well, I think that phrase, it's usually spoken by someone who is not a woman. It is usually spoken by men. And I think when you look at a funny woman, what does she have most? She has confidence, and confidence is power. And I think it comes down to this power struggle, this kind of white male, we want to be the top of the food chain, and they want to kind of beat that down and just exclaim a woman is not funny. Where I come from and where I grew up, all of the women were funny. We're the funniest people in the family and the strongest, and they ran the show. Whether they pulled in the biggest paycheck or not is a different story. But yeah, I think it's about power. It's about a way to continue to kind of keep women in a lesser position. And there's nothing more frightening than a confident woman. This season, actually for the past few seasons, you see so many aspects of his personality. But how have you observed Joel from season 1 to now? And did you ever judge or debate
his actions when you personally saw and you were observing it? What did you think of it? I'm constantly observing his actions and thinking, in my own brain, like, what, whether it's right or wrong or whatever, but, I'm not too judgy. He's a human being. He makes mistakes. He's flawed like any other human being. And it's really been an interesting evolution for him, especially in terms of where he started out. In the first episode, he cheats on his wife and leaves her. And it was a little tough because, a little tough for me, just because, especially in the first episode, Midge is so beloved. I mean, everybody just falls in love with her immediately. And I'm just this jerk, who cheats on her. And, but the beauty thing is that Amy and Dan, our creators, our writers, they had a whole story for him. It wasn't just this one note villain, this antagonist. They had a whole, seasons long progression for him. And I love watching him evolve and grow up, in a sense, because they really, these two kids got married young. They had kids young. They never really knew what they wanted to do in their lives. And they were kind of just trapped. Joel especially just felt so trapped. And I guess the good thing that came out of it was that, Midge was able to find her voice and find this new profession that she's really good at. So in a way, it kind of all worked out for the best. But yeah, we're still, I'm still figuring it out. I'm still watching him grow and evolve, and I love every bit of it. Luke, it's so interesting, and I have to mention this. You were shooting Gossip Girl 2.0 and Marvelous Mrs. Maisel back to back. And for me, they couldn't have been more different. Of course, that's the fun of being an actor, I guess. Yeah. But I think of the two characters you played, I want to know, are you the kind of actor who's able to instantly detach from the character and the world that you're a part of to play another, and vice versa? And B, if you had to honestly say, and no one's going to judge you for it, what were you actually having more fun playing? I think in terms of it's day by day, sort of, and how attached you get to a character. You have to find a way to kind of come home at the end of the day and maintain all of your real life relationships and make sure all the checks are written to pay the rent, so it's part of the practice. But it's definitely fun to play make-believe, and it's not necessarily that it's hard to let go of, but it's just so fun to stay that you don't always want to let go. It's more about whether or not you want to leave things behind. In terms of your second question, there are different degrees of fun. In both cases, I get to wear really nice clothes. So that is true. I'm not complaining. Lenny is a little bit, yes, but he's wearing that classic, that period stuff. It's really. But he's charming. He can wear anything. Lenny can just wear anything. That's right. Put him in a paper bag, he'll be fine. Yeah, he's good. Stay tuned. Maybe he will. You never know how he ends up next in the police station, right? He may be in a paper bag. Yes. Fingers crossed. Fingers crossed. Oh my God, that just reminds me of what you're going to give a lot of people in the internet hope. As for someone who's not in the internet that much, Luke, I'm sure you're aware that you had different degrees of adulations coming for both your characters in equal measures, but very different kind of adulations. Sure. Are you tempted to actually check out what both your characters, what they're talking about, and the kind of love you're getting from all kinds of fans? Well, I'm barely on the internet, but yeah. I have Google and Bing too. Something happened this year where I learned about this, the word DILF. And that
That was a real revelation for me. But that's another reason not to go online. But that's great. I mean, I don't know, must be fun. Must be fun in there. I should really endeavor to get more invested in it. I'll start making memes. Of your characters. Yeah, you're gonna lose me to 4chan. 4chan. Oh, God.